Jai Hind, my dear student, once again. Your favorite Chandrikant sir is here in front of you again with a new and very interesting topic. Student, today's video lecture is totally based on a very important topic of the chapter locomotion and the movement. In this chapter, student, we have covered the structure of the three types of muscles. The basic information related to this chapter I have already given in my lecture number 1 related to this chapter. Clear, student? Last video mein I have already explained you about the three types of muscles, and now our today's topic is totally based on the structure of the striated muscles. आज हम लोग इस वीडियो में striated muscles के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. Clear, student? So regarding the structure of the striated muscle, last time I have told you the striated muscles, as you know, they have the alternate light and dark bands. That is why they are called as the striated muscles. आप देख सकते हो यहाँ पे पिछली बार मैंने बताया था कि they have the alternate dark light band. That is why they are called as the striated muscles. Since the striated muscles work under our will, that is why they are called as voluntary muscles. और तीसरा नाम मैंने आपको बताया था, they are also known as the skeletal muscles. Why they are called as skeletal muscles? Because these remains attached to the limb bones or our skeletal system. That is why they are called as the skeletal muscles. Clear, student? और शकल सूरत कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? They are long. आपको याद आ रहा होगा, you must be remembering, they are long, unbranched, multinucleated. Clear? They often get tired. So this is about the general information. Clear? अब हम लोग पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं. Now let us see the structure in detail. Student, this is a bone. Clear? And this one is the muscle. Muscle आप एक organ कह सकते हो या tissues को बोल सकते हो. And this muscle remains attached to the bone by the tendon. It's a connective tissue. You already know this. Clear? अब देखो इस बंडल में क्या होता है. It's a form of, you can say, bundle. Now these striated muscles आप देखोगे तो खूब सारे bundles एक दूसरे के साथ मिलके अटैच होते बंधे रहते हैं. And this layer that covers this bundle or entire muscle is called as the epimysium. उसको हम लोग बोलते हैं epimysium. This covering you can see, this is called as epimysium. फिर उसके अंदर हम देखेंगे तो you can see numerous fascicles are there या fasciculi are there. Clear? And these fascicles they are again covered by, ये देखो मैंने अलग से निकाल के दिखाया. You can easily see this is the fascicle or the fasciculi. Clear? और इसकी जो covering होती है, this is called as the you can say perimysium. Clear? यहाँ पे आप फोकस करिए, इसकी covering को हमने बोल दिया epimysium. Now the covering or the connective tissue which covers or surrounds the fascicles, they are called as the पेरीमाइसियम. अब इसके अंदर भी स्टूडेंट देखोगे तो खूब सारे जो है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर. एक्चुअली में यही मसल फाइबर होते हैं और मसल सेल होते हैं. क्लियर? यू कैन सी दिस. और हियर इन दिस डायग्राम यू कैन आल्सो सी दीज आर द सेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स. मींस दीज मसल्स हैव द ब्लड सप्लाई. क्लियर? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग दे नीड ऑक्सीजन. क्लियर? Now come to the structure of the muscle fiber. यहाँ पे स्टूडेंट आपको पूरा फोकस करना है. Clear? Muscle fiber or the muscle cell. Clear? You have to focus on this structure. Clear? तो muscle fiber को आप देखोगे तो जैसे सेल में you can see the outermost covering of animal cell is the plasma membrane or the cell membrane. तो here we use the term sarcolemma. Clear? We use the term sarcolemma. This is the sarcolemma. Clear? आप ऐसे देखो, sarcolemma is there. Clear?
फिर inside the cell or muscle cell a liquid is there, or you can say the cytoplasm is there, that is the called as the sarcoplasm. Clear? And sarcoplasm contain the cell organelle. Clear? They have the endoplasmic reticulum, that is the sarcoplasmic reticulum. ये नाम स्टूडेंट याद रखना. The cell membrane known as the sarcolemma, cytoplasm is known as sarcoplasmic, this is known as the sarcoplasm, and inside this sarcoplasm endoplasmic reticulum is there, that is called as the sarcoplasmic reticulum. Clear? तो ये तीन नाम एसोसिएटेड है स्ट्रेटेड मसल से. Clear? अब what you have to focus here, you have to focus that the endoplasmic reticulum or sarcoplasmic reticulum, it's a storehouse of calcium. Clear? It's a storehouse of calcium. It stores calcium. Student, this calcium is very much necessary for muscle contraction. Clear student? कभी कभी प्रॉब्लम होती है, मस्कुलर स्पाज्म हो गया, मसल में पेन हो रहा है, मस्कुलर एक्टिविटी सही नहीं हो रही है, डायरिया डिसेंट्री की वजह से वीकनेस हो गई, तो डॉक्टर व्हाट दे डू, दे प्रिस्क्राइब द कैल्शियम टैबलेट्स. क्लियर? सो कैल्शियम इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. यू विल सी इन द कमिंग लेक्चर, जब हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के समय, आई विल टेल यू द रोल ऑफ कैल्शियम आयन. क्लियर स्टूडेंट? सो हियर यू हैव टू फोकस. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस, अब यहां पे आप देखोगे इनसाइड द सार्कोप्लाज्म पैरेलली अरेंज्ड microfilaments are there. Clear? और they are called as the myofibril or myofilaments. इसके अंदर खूब सारे इस तरह से parallelly arranged filament होते हैं. They are the myofilament or the myofibrils. Clear? अब हमको इसका स्ट्रक्चर देखना है. myofibril का स्ट्रक्चर आपको देखना है स्टूडेंट. Clear? So you focus on it. आप यहां पे पूरा ध्यान लगाओ. Clear? It's the structure of the myofibril. Clear? So here you can see the alternate dark and light bands. You can see dark band, light band, dark band, light band, dark band. Clear student? So this is the these are the proteins actually, actin and myosin. Clear? This you can see the striations, which is dark one is the myosin. ये myosin है, this is the myosin protein, and this light is the actin. Clear? So myosin, actin, you can see easily. Clear? Actin को what do we say? We say the light band. Actin को we say the light band. और मायोसिन को we say what do we say? We say the dark band or an isotropic band. I band or light band. I band or light band. I means isotropic band. Clear? Or you can say here you can see this dark band. Clear? or the myosin. It is because of the myosin ये dark band है और इसको A band बोलते हैं. A band और anisotropic band. So hope you are clear with this. Clear? और ये जो alternate arrangement है, again I am telling you, ये arrangement है light और dark striations जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, उसकी वजह से ये है, ये दिखाई दे रहा है A band और you can say I band. Clear? actin और myosin. Clear student? Now let us see in detail. आप इसको पूरा detail यहाँ पे देखो. You have to focus. Clear? You have to focus here. This is the sarcomere, the structural and functional unit of muscle fiber. Clear student? हमें इसी के functioning को देखना. We have to know the functioning of this sarcomere. Clear? Muscle contraction में the role of sarcomere is there. So up now focus here. Clear? So these lines you can see, ये actin है, actin और I band. Clear? और isotropic band. Clear? और यहां पे आप देख सकते हो this is the myosin और A band और anisotropic band. Clear?
Keep on focusing here. Now this I band remain attached. ये बंधा रहता है Z लाइन से. यहां भी आप देखो ये Z लाइन से बंधा रहता है. क्लियर? Z लाइन से बंधा हुआ है. क्लियर? एंड दिस वन इज द मायोसिन. इसमें सेंटर में आप देखोगे स्टूडेंट, उसकी जरूरत या नहीं है, बट यू शुड नो यहां भी ये दिस प्रोटीन रिमेन अटैच्ड. दिस प्रोटीन रिमेन्स अटैच्ड टू द M line. दिस इज कॉल्ड एज द M line. Clear? Now the portion between the two Z lines, this is the Z line. Clear? ये पूरा देखो, you can see this entire is the I band और actin. ये पूरा actin है. उसके सेंटर में you can see Z line. Here you can see Z line. Clear? और यहां बीच में आप देखोगे this is the myosin और thick filament. Myosin और thick filament. और ये क्या है? आई बैंड, एक्टिन और थिन फिलामेंट. क्लियर? अब नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली. अब देखो कि एक सार्कोमेयर में क्या है? द पोर्शन बिटवीन दीज टू जेड लाइन इज कॉल्ड एज द सार्कोमेयर. दिस इज द एक्चुअल यूनिट ऑफ मसल फाइबर. क्लियर? नाउ अब इतने पोर्शन में देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है. ये हाफ क्या है स्टूडेंट? ये हाफ है आई बैंड. क्लियर? दिस वन इज द, यहां तक है ये आई बैंड. ये हाफ आई बैंड हो गया. यहां भी हाफ आई बैंड हो गया. क्लियर? और ये क्या हो गया? ये पूरा ए बैंड हो गया. सो अ सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड, कंप्लीट ए बैंड, यू कैन सी कंप्लीट ए बैंड, देन हाफ आई बैंड, देन हाफ आई बैंड. सो हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड, हाफ आई बैंड, जेड लाइन ऑन बोथ द साइड्स. So this is the actual में structure of the sarcomere. Clear student? And you can see some portion of the I band it overlap on the myosin. देखिए कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा इसका you can see ये इसके ऊपर overlap है, ये इसके ऊपर overlap है. Clear? So when we talk about the dark band, तो डार्क बैंड में क्या होता है? यहां पे डार्क बैंड में एक छोटा सा यू कैन सी इसमें ए बैंड भी होता है. आप देख सकते हो ना, ये पूरा डार्क बैंड है, इसके साथ ए बैंड, इतना पोर्शन इसका भी है ना, ये है ना. तो डार्क बैंड जो आप देख रहे हो इसमें ए बैंड का भी एक पार्ट होता है ना. इसमें ए बैंड का भी एक छोटा सा पार्ट होता है. बट ये आई बैंड में इसका कोई पार्ट नहीं होता. क्लियर? So these are the you can say structure which are often asked in the examination. Clear student? So I hope that you are able to understand the structure of the myofibril. Clear? This is very important. Clear? You have to focus on this region only. Clear? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे sliding filament theory. I will explain you the sliding filament theory in my next video. Clear? Where you will be able to know the functioning of this. क्योंकि जब contraction होता है, you will see myosin में heads होते हैं. Clear? इस तरह से head होते हैं myosin के. They bind to the actin और फिर ये खींचेगा. Myosin pulls these two इसको खींचेगा. तो ये जो Z line है इसका distance कम हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. Clear? So you will see in my next video. Clear? So student, I tried my level best to explain you the structure of the sarcomere. Clear? So you watch this video 2 times 3 times. Clear students? So that everything will be clear to you. Clear? So in my next video I will explain you about the structure of the actin and the myosin and then sliding filament theory. Clear? Student, I am putting the you can say some animated video to explain this structure. You can also say this. Clear? So I request you to please watch this video many times so that your doubts can be cleared easily. Clear student? So in my coming videos I will come with the interesting topics, that is the structure of actin and myosin as well as the sliding filament theory. Clear student? Till then keep on watching. Thank you very much.
In a relaxed muscle, actin and myosin myofilaments lie side by side, and the H zones and I band are at maximum width. During contraction, the actin and myosin myofilaments interact. The actins are pulled toward the center of each myosin myofilament. As a result, the sarcomeres shorten. In the fully contracted muscle, the ends of the actin myofilaments overlap. The H zones disappear, and the I band becomes very narrow.